Assalamu alaikum. This is Muhammad Umar Iftikhar with another exciting episode of Between the Lines. Today, we have an interesting guest with us. He is a real-life counter-terrorism expert who has ventured into the world of literature. He is Mr. Umar Shahid Hamid. Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत शुक्रिया सर फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ My आवर pleasure. पॉडकास्ट. सबसे पहला सवाल. You started your journey as a police officer, then you started writing about your experiences through your first three novels, The Prisoner, The Spinner's Tale and The Party Worker. Transition किस तरह से हुआ ये? बेसिकली मैं अभी भी अपने आप को पुलिस ऑफिसर ही समझता हूँ फंडामेंटली, Okay. बट समवन हु डज राइटिंग एज अ हॉबी ऑन द साइड. ये जो मेरी जर्नी या प्रोसेस थी, वो उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी किसी किस्म की कोई ख़ास लिटरेरी एस्पिरेशंस नहीं थी. इट बिगैन एज अ सॉर्ट ऑफ कैथार्टिक एक्सरसाइज कि उस टाइम पर जो जिस तरह होती हैं किसी भी प्रोफेशन या करियर में जो प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, उनको काइंड ऑफ काउंटर करने के लिए. एंड देन इट बिकेम that writing turned into a manuscript, and the manuscript turned into a book, and then the book turned into several books. तो वो and उसमें again perhaps शायद मेरे अपने experiences हैं एक हद तक, लेकिन it was more to do with the stories I heard and the experiences of fellow पुलिस ऑफिसर्स जिनके साथ मैं उठता बैठता था. बिकॉज आई फाउंड दैट जब हम लोग आपस में बातचीत करते थे तो द स्टोरीज दैट दे हैड टू टेल वर सो फैसिनेटिंग एंड वर फार स्ट्रेंजर एंड मोर फैंटास्टिक देन एनी सॉर्ट ऑफ फिक्शन दैट आई हैड एवर रेड. एंड और वही वाली बात है कि वो एक ऐसी दुनिया थी जिसमें आम लोगों की इनग्रेस नहीं है. सो दो स्टोरीज अदरवाइज वुड नेवर गेट आउट. वो सिर्फ एक आपस की दोस्ती यारी में गपशप के हद तक रहती थी और उस सर्कल से बाहर नहीं निकलती थी. सो आई चोज टू स्टार्ट पिकिंग अप सम ऑफ दोज स्टोरीज एंड देन अडेप्टिंग देम फॉर माय नॉवेल्स. Oh, zabardast. So it was like you tried to create a fictional world out of the real life experiences that you had. Yes, yes. ताकि वो audience से relatable हो. Somewhat? बिल्कुल. आई थिंक इन जैसी चीज़ों में वैसे भी आई थिंक फिक्शन इज़ अ फार बेटर टूल देन नॉन फिक्शन. बिकॉज एक तो अगर आप उन्हीं चीज़ों के बारे में शायद कोई नॉन फिक्शन किताब लिखते हैं तो उसकी ऑडियंस जो है वो उससे कहीं छोटी होती है, वो एक महदूद रहती है टू काइंड ऑफ एन एकेडमिक सॉर्ट ऑफ ऑडियंस. And of course, as is with all these things, then it's very difficult to verify and counter-check those facts. So fiction, I think, enables you to reach a far wider audience. Of course, you have the license. You don't have to stick exactly to the story as is. You have a license to take that story or those characters as a base and then to expand upon them to your own desire. So I think fiction works much better as a tool for storytelling. So let's talk about the first novel that you wrote, The Prisoner, which was published in 2013. So उसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट होता है जिसको किडनैप कर लिया जाता है. So I mean इसकी जब आप लिख रहे थे तो ऑब्वियसली being a police officer वो सारे experiences आपके जहन में आए होंगे, जो close encounters और so did you feel any sort of you mean कोई इसमें ऐसा कोई challenging phase था where you were you had some difficulty writing some parts of the novel because most of them were based on your real life experiences as a police officer? Well, as I said, The Prisoner and in fact even the other books, my other books are based less perhaps on my experiences and more on the experiences of colleagues and जो हमारी बहुत सी हमने कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें पुलिस के अंदर सुनी. Because I feel and people often ask me this कि जी आपके जो characters वगैरह हैं उसमें से have you ever based a character on yourself? And I haven't. The truth is I haven't because I feel it's very difficult to write about yourself. मैं नहीं समझता that I have the necessary level of introspection to do that. It's far easier to craft characters based on people that you know, people that may have been there, or to create totally new characters and to adapt those stories. So yes,
in that sense, the difficulty always, not just in The Prisoner, that I've always had is trying to write or trying to attempt any character or any story based on myself. But बाकी जो जितनी भी कहानियाँ हैं और जो बाकी sort of मेरे colleagues, बहुत से colleagues की personal stories वगैरह हैं, उनको taking that and events that happened, and I try to fashion a narrative out of that. Okay. So speaking about characters, I always ask this whenever I'm out talking to an author: character or the setting, or both go together in your mind? पहले आप क्या craft करते हो, character या setting? Both have to go together. Because I think when you start thinking of a story, तो आप अपने जहन में एक सिनारियो सेटिंग बनाते हो, and then those characters that you build up have to fit that, and then you'll go through a sort of exercise कि okay, what कौन सी ऐसा है, किस किस्म का इस सिनारियो या सेटिंग में किस किस्म का बंदा या बंदी होगी, उनके क्या what will be their sort of characteristics and things like that. So I was reading when I read your novel The Party Worker, उसमें दो characters हैं, एक बादल बॉक्सर और एक झींगा, and then you have अदनान एदी शाह. तो इनके नाम किस तरह से, मतलब आपका कोई एक equation है through which you create your characters and the persona and the names? That's an interesting question, because actually मेरी जो ख़ास तौर पर कैरेक्टर की नेम्स की प्रोसेस है वो बहुत ही रैंडम है. Okay. और अक्सर लोग जो है ना वो यही कहते हैं कि जी आपने फ़लाने बंदे का या फ़लाने कैरेक्टर का नाम जो है वो इसलिए दिया, but actually it's a totally random process and is often dependent on when I'm writing that bit, कि what I've read or what I've seen that morning or that evening. तो वो it's a totally kind of of course what I do kind of try and do is that those names should fit into the to the sort of to the mold of the character. So आपने जिस तरह बादल बॉक्सर का कहा, तो that character was based on a Lyari gangster. So the name has to be something that will fit into a sort of Lyari setting. Yeah. तो इस हद तक वो होती है, बट अदरवाइज जो है वो कैरेक्टर नेम सिलेक्शन इज अ टोटली रैंडम प्रोसेस. So it's like it's based on impromptu impulse. Impromptu, and अक्सर मेरे जो दोस्त हैं वो कंप्लेन करते हैं कि यार तुमने हमारे ऊपर वो कर दिया, and it's just not that I'm trying to kind of target them or anything. It's just that perhaps I would have met that friend that morning, and maybe I was at the time writing a certain piece, so I thought अच्छा चलो यार और कोई नाम नहीं आ रहे हो, इसी का नाम डाल देते. Okay, so talking about the narratives that you've presented in your novels, Betrayal जो आपका novel था which was published in 2021, उसमें मतलब मैं कोई spoiler नहीं दूंगा, especially for those who want to read this, कि एक Indian spy is captured in Pakistan and then he reveals that there is a mole in our establishment. तो कभी कोई ऐसा फ़ोन आया है कि आप तो बहुत सच लिख रहे हैं, इस तरह कुछ हुआ है कि नहीं? एक्चुअली जो भी मैंने किताबें लिखी हैं, in fact, to be very honest, they have been appreciated across the board. Obviously, I have worked with many colleagues in law enforcing agencies and intelligence agencies, and I haven't ever kind of received any sort of criticism from those quarters. In fact, it has always been positive reinforcement, to be honest. Great. So what is your writing process? Do you create an outline, या आप बस कभी ज़हन में कुछ ख्याल आया लिख लिया and then you compile it as a book? So I think often it starts with a random thought. जैसे आपने कहा ज़हन में ख्याल आया किसी चीज़ का कि यार ये फ़लाँ चीज़ की जो है ना, it would, अगर इसकी आगे कोई कहानी जोड़ी जाए, and then oftentimes that thought comes and is logged somewhere, but उस टाइम पर कोई और मज़ीद काम नहीं होता, because perhaps I'm writing something else or I'm busy with something else, and then I kind of go back to it when I'm preparing to write a new book. कि अच्छा फ़लाँ idea था, how can one adapt this, how can one expand upon this, and then I start sketching an outline of a story. So there's a setting, there's characters, there's a rough this thing of how the story will proceed.
I don't always stick to that outline. It can change over time because, when you're writing a book, especially, it's a process that from the time you start writing it to the time that it actually sort of comes out can take up to 2 years. So time period when there are lots of changes, you change your mind, you find a better story, you find a better angle. लेकिन outline जो है वो आपको ये आसान कर देती है कि it gives you structure. So when you're writing, it gives you structure that okay, I've got this skeleton outline. अब ये कहानी जो है इसके साथ आगे बढ़ानी है. तो that's always useful. But yeah, it sort of starts with both, with an idea, and then from that idea comes an outline. So I think outline gives you the direction. Obviously उसमें tweaking तो होती रहती है as you go on. So speaking about characters, जो मेरे साथ होता है कि sometimes characters tell me what to do or what to write. आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी character के बारे में लिख रहे हैं and you're stuck at a point and then out of impulse आप कहते हैं नहीं इस character को ये नहीं, इसको ये action करना चाहिए. Interesting. Yes and no. मतलब I don't think कि इस तरह perhaps actively हुआ है, लेकिन yes, ये ज़रूर हुआ है कि when you're writing a certain thing and perhaps you have an outline of the story going in a certain direction, and then looking at it, you go away and कभी ऐसा हुआ that perhaps you even started writing the story going in a certain direction, and you look at it and you turn back and you say, nahi, actually that doesn't make sense. ये जो चीज़ है ना, this makes more sense because this character would most likely act in this way rather than that way. So then you kind of take a twist. Or more this thing, the way that I kind of operate is that I'm always looking at it from the point of view of a story. So I always say that I am perhaps less a writer, more of a storyteller. Okay, so I'm always following the story. Ke, look, what makes the story so more interesting? What makes the story more fascinating? What makes the story flow better? And if, a character is going in a certain direction and I subsequently feel that, nahi, the story would work better if the character did this instead of this, so I'll go in that direction. All right. So talking about stories and being a storyteller, I think this is a very interesting point, especially for those who are aspiring to become writers that don't write but share stories. ये हर genre में ही इसका जो है वो मतलब उस हर genre में कामयाब होंगे. So speaking about stories, when you're writing a chapter, you've begun a new chapter, तो एक रूल हमने देखा था इश्तियाक अहमद की इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ में कि वो एक चैप्टर एक कैरेक्टर के बारे में होता था, सेकंड चैप्टर दूसरे कैरेक्टर के, एंड इन द फाइनल चैप्टर दे वर ऑल मर्ज्ड टुगेदर. सो डू यू फॉलो दिस सीक्वेंस या उसमें आप अपने हिसाब से कहानी का फ्लो नरेट करते हो? मसलन अगर आप मेरी किताबें देखें तो द पार्टी वर्कर इज़ बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, द इलेक्शन व्हिच इज़ माय न्यू बुक is also sort of based on this type of structure, but the others aren't. It really kind of, when you start writing a book, so you, after a few thousand words, aapko uski flow samajh aa jati hai kitab ki, and then you kind of then choose to go with that flow. कि अच्छा यार इसको जो है ना, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है, कैरेक्टर वाइज स्विचिंग करनी है, या जस्ट एक नैरेटिव स्ट्रेट नैरेटिव टेल करनी है, फ्लैशबैक्स में करना है, या क्या करना है. तो द काइंड ऑफ द बुक एज यू आर राइटिंग इट लीड्स यू टू दैट पाथ. सो आई काइंड ऑफ आई ऑलवेज फॉलो दैट कि जो उस टाइम लगता है ना कि लॉजिकल निकल रहा है, उसकी तरफ मैं फिर रुझान करता हूँ. आई थिंक उसी में फिर हकीकत भी होती है, उसमें हकीकत होती है. एंड आई थिंक ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ the flow of the story. So again, I keep coming back to this, that I think बहुत से लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो the focus is perhaps on the language, the literary value of the book, rather than the storytelling value of the book. And बहुत सी किताबें ऐसी हैं by many renowned writers which, if you kind of look at them from a structural point of view, they're fantastic stories, they're fantastically written, but the story doesn't always gel, right? So either maybe the beginning is too slow, maybe it slumps in the middle, maybe the end after a very good build up falls flat. So I think that's why I keep saying, and my advice always to aspiring writers is this, ke
you know, play the flow of the story, कि जो natural उसकी flow निकल रही है ना कहानी की, because that's what will make it engaging. Yes, exactly. You know, ज़बान, you know, how good the language is, and वो खुद ब खुद सीधा हो, with more experience, with more this thing, with you know, you keep improving on those things. Those things work themselves out, but the most important thing is the flow of the story. मुझे याद है द पार्टी वर्कर में आई थिंक जो चैप्टर के नाम है वो भी आपके कैरेक्टर्स के नाम पे That's right. थे. Yeah. तो क्योंकि मुझे वहीं से क्लिक किया कि इसमें Yeah. हर कैरेक्टर Yeah. की अलग जर्नी Yeah. बताई गई थी, Yeah. एंड देन एट द एंड वो. अच्छा, कमिंग अप टू स्टोरी टेलिंग, जब मैंने आपको पढ़ना शुरू किया आपकी किताबों को, स्पेशली इन द स्पिनर्स टेल, तो मुझे लगा कि आपके अंदर ना इंस्पेक्टर जमशेद वाली क्वालिटीज़ हैं जो उर्दू में जो हमने पढ़ी है इश्तियाक अहमद साहब की कहानियाँ. कभी किसी ने कहा है आपसे कि यू मे बी अ रियल लाइफ इंस्पेक्टर जमशेद ऑफ पाकिस्तान? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन आई थिंक उसमें बात वही आती है कि व्हेन यू कंबाइन दीज एलिमेंट्स ऑफ बीइंग ए फंडामेंटली ए थ्रिलर राइटर, राइट, तो एंड देन कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड एज आई डू ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, तो एक तो आपका क्योंकि जो उसकी न्यूआंसेस होती हैं, obviously you are well aware of them, you know, so if I write let's say a character, or if I write a scene in a police station, in a thana, तो जाहिर बात है मैंने मतलब हज़ारों थानों में गया हूँ, गुजरा हूँ, तो my ability to capture the essence of you know what goes on there is perhaps better than some other writer who is not come from that sort of background, right? And then the second thing is कि as a thriller writer, you are always geared towards, जो आपने इश्तियाक अहमद साहब का भी जिक्र किया ना, कि you're geared towards storytelling, right? So thriller writers almost have to keep up a tempo, exactly, to keep their readers from turning the next page, and I've always felt that this is not just something for thriller writers. I think all good writers should do that. You know, बेशक आप romance novels लिखें, बेशक आप literary novels लिखें, जो भी आप लिखें, but I think, you know, that's the sort of ingredients of a good story. But thrillers में, और खासतौर पर crime thrillers और या espionage thrillers में तो ये बहुत important होता है ना कि your ability to grip the audience and to hold their attention in such a way कि वो they keep turning over till the last page. So, I mean, keeping the conversation going regarding storytelling and keeping the readers hooked, show don't tell का जो कॉन्सेप्ट है इन राइटिंग, वो मैंने बिट्रेयल में देखा था, जिसमें वो ट्रक का सीन है दो कैरेक्टर्स का, जिसमें वो एक दूसरे के, मैं पूरे एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द स्टोरी. तो हाउ क्या कहना चाहिए, हाउ सिग्निफिकेंट is for you to create those show don't tell scenes जिसमें आप हर एक्शन हर सेटिंग को एक्सप्लेन करते हैं विदाउट बोरिंग द रीडर, कि मतलब नरेशन चली जा रही है, एक्शन नहीं हो रहा. So I think I'll take the reverse thing. When I started writing, तो you know I was very lucky कि मुझे early on मुझे एक agent मिल गई to kind of you know publicize my books and to sell them and all that. एंड उसने मुझे ये एडवाइस हमेशा दी थी. आई थिंक व्हेन आई सेंट हर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रिजनर, तो उसने 2-3 पॉइंट्स पर वाइल शी वाज गोइंग थ्रू इट उसने कमेंट किया कि यू नो शो डोंट टेल. एंड यू नो एज समवन हु हैड नेवर हैड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग बिफोर दैट, मुझे तो इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था. ऑब्वियसली यू नो you are someone who's coming from that world and are far more aware of these things than I was. But her comments always stuck with me. And I think, you know, going forward, जो मैं कह रहा हूँ कि I think it's उल्टा यूँ होता है कि when you are using the process of show don't tell, that is easier to write. I won't say it's easier to write, but that is the more natural form, and that is the thing that will keep readers more engaged. Yes. Whereas अब अगर मैं अपने आप को एज अ रीडर देखूँ, यू नो, मूविंग अवे फ्रॉम राइटिंग, many people sort of write books and all, and one of the things that you find in a lot of first time writers is that they don't adhere to this principle. You know, they're very knowledgeable about whatever they want to say, and वो फिर
उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशनों में चले जाते हैं. एग्जैक्टली. You know कि जी वो इस तरह हुआ था तो फिर उस तरह हुआ था. And I think a lot of people who kind of come from other backgrounds, so you know if you've had some other career, so if you've been, let's say, a banker or a doctor or a civil servant, and then you've switched and come and become a writer or a novelist, तो वो that desire to explain the background of things rather than to show it, Exactly. वो हमेशा सामने आता है. You know, and that's where you start, I think, boring the readership, which is why I think that, you know, in show don't tell, it is harder, but obviously you get used to it. I think the better word than to say that it's harder is you have to think about it. आपको थोड़ा उसमें सोचना पड़ता है कि किस तरह, you know, how to pull this off. So if you have to put some thought in it, but again, it comes back to that issue of the flow of the book and having the ability of holding on to the attention of the reader. Yeah. वो जो कॉन्सेप्ट है ना पेसिंग का इन राइटिंग, exactly, तो वो बहुत सारे, मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ ऑथर्स कैरेक्टर की डेवलपमेंट या स्टोरी प्रोग्रेशन में नहीं होते. वो कहते हैं कि अच्छा अगर वो ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन की फील क्या है, लुक क्या है, किस स्पीड पे चल रही है, पायलट ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, तो वो सारी डिटेल्स में जाते हैं. दे सॉर्ट ऑफ यू नो गो अवे फ्रॉम द मेन नैरेटिव. या इवन अगर जिस तरह कोई कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो अब कैरेक्टर को समझाने में अगर आप 2 पैराग्राफ लगा दो कि अच्छा वो उसकी दाढ़ी थी, उसका रंग चिट्टा था, उसने you know शलवार कमीज पहनी थी because he came from, that's all explanatory, and those are things that you can do away with and explore through show don't tell rather than, you know, than saying it out flat. So do you think कि हम show don't tell को जो है वो डायलॉग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर Absolutely. वहाँ पर narrative will not be in your face, yeah, but it will be sort of a conversation. Exactly. Yeah. In fact, I have done that in several of my books where you convert that into dialogue and you reveal facts about the situation or about an individual character through a dialogue, you know, between two other characters or between that character and other characters. Okay, so Umar Saab, we have talked about your first 4 books. अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिस पे पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, पूरा साउथ एशिया जो है वो मुत्तफ़िक है, और वो है क्रिकेट. You wrote and published The Fix in 2019, and personally speaking, I loved it क्योंकि उसमें action began from the very first chapter and there were very relatable characters. आप कह सकते थे अच्छा ये है तो नाम इसका कोई और, लेकिन असलियत में ये फला बंदा है. So starting from espionage and national security issues, you wrote The Fix. ये कहाँ से idea आया? So it won't come as a surprise to you or to anyone who's read any of my books. I'm a big cricket fan. Yes. And अक्सर मेरी किताबों में Fix के अलावा भी बहुत से cricketing references होते हैं. And after I had written the first 3 books, which, as you said, were, you know, very similar, almost तीनों जो पहली 3 किताबें थी, they were all kind of about Karachi, about different aspects, very crime noir, thriller noir type books. I wanted to kind of expand into something different. And the story that came in front of me was the story of match fixing in cricket. And उसकी वजह ये थी कि एक्चुअली अगर आप उस स्टोरी को रिसर्च करें या उसके बारे में पढ़ें तो it is one of the, you know, it's almost like a Shakespearean play. It has all the elements of a classic tragedy. तो वो और हमने शायद हमारी कोई, it's perhaps to do with our relationship with cricket as a society, कि एक्चुअली हमने उसको कभी भी उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया. मतलब you know when these sort of incidents occur of match fixing or spot fixing, तो there's a blow up and लोग you know there's a great amount of outrage, लेकिन वो फिर चीज़
ढल जाती है, एंड नो वन एक्चुअली गोज बैक एंड अच्छा यार हुआ एक्चुअली क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, what really happened, and with time the facts get confused. So I thought that it would be fantastic to actually take this as a story, and I think this is a story that really can only be told in fiction, because उसमें अगर आप कभी भी कोई भी आदमी इसके बारे में कोई नॉन फिक्शन किताब लिखने की कोशिश करे तो शायद वो सुबह से लेकर शाम तक लाइबल सूट्स का जवाब ही देता रहे. तो so this was, it was much easier to change the setting a little bit, to change the characters a little bit, but take the fundamental elements of the story and to retell it as a novel. So that's why I thought on top of that, the other thing was to kind of instead of using the men's cricket team as a backdrop, to use the women's cricket team, because उसमें एक और element आ जाता है कि ख़ास तौर पर if you study the history and the story of the Pakistan women's cricket team, that is another fascinating story in itself. The struggles that these women had to go through to kind of just get a seat at the table, to get acknowledged. तो वो उस कहानी को फिर मैच फिक्सिंग वाली कहानी से जोड़ कर आई थॉट इट वाज वेरी वेरी पोटेंट. और वो वही है, बट आई वुड से कि आई सपोज द फिक्स इज द ओनली बुक ऑफ माइन वेयर देयर इज स्लाइटली डिवाइडेड ओपिनियन कि जो लोग क्रिकेट के फ़ैन नहीं हैं वो कहते हैं जी हमें बाकी सारी किताबें अच्छी लगती हैं लेकिन वो हमें नहीं पसंद है, और जाहिर बात है जो क्रिकेट के फ़ैन हैं वो उसको एंजॉय करते हैं. But I thought it was, it was, at the time, it was a tremendous challenge writing it, because it was the first book that I had moved away from जो मेरे core strengths थी ना as a writer. तो पहली दफ़ा थी कि I had gone and started looking at things that I had not been either part of first hand or, had a direct knowledge of. तो वो that was a challenge. Then writing female characters, because again पहली 3 किताबों में साथ साथ एक ये भी वो था which was also criticism, but there was very little I could do about that, कि लोग कहते थे कि जी आपके strong female characters नहीं हैं. And that was also because the world that the first 3 books look into was largely this world of the underworld of Karachi and the police and all that. और उस time पर it was a very male dominated, male chauvinistic sort of world. So had I created female characters, that would have felt unnatural to insert those characters into that world. So that's why I decided, to do it, to do the fix in a different way, using very strong female characters and using this very strong story of match fixing and, temptation and all these sorts of things. I think the way you started the first chapter of the fix, that was really इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग रीड, जिसमें वो ओवर करा रही होती हैं जो फीमेल बॉलर हैं, और उसके बाद देन यू स्विच टू आवर T20 कैप्टन सनम खान, हु एंड्स अप इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद अ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, हु मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन वही है जो मैं समझ रहा हूँ. आप जो समझें. मेरे ख्याल से इसके आगे मैं कुछ नहीं कहता. मेरे ख्याल से फिक्शन की खूबसूरत बात यह है कि इफ़ यू शेयर all the personality types, लेकिन आप नाम चेंज कर दें तो रीडर्स कहेंगे कि नहीं हो सकता है ये हो सकता है वो हो, मुझे पक्का यकीन है कि ये है लेकिन हो सकता है ये हो. सो उसमें जो अगेन जो कैरेक्टर्स की बात है, इसमें आपने 2 मैच फिक्सर्स का नाम लिया था जो ऑब्वियसली वो हैं बुकीज़ थे. वन वॉज सलीम यूरो, द अदर वॉज बाबर कादिर. तो सलीम यूरो का नाम कैसे आपने कंसीव किया? मेरी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है उसका एक फ़ायदा ये भी है कि मैं हर किस्म के लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर. सो ओवर माय टाइम and especially around the time that I was writing the fix, I had met several bookies, and I based those characters on those bookies. And what they were actually like and what their lifestyle was like and how they came across and all those sorts of things. So that is where Salim Yoro emerged from. And Babar Kadir actually was again taken based on a figure within the Pakistan team. In fact, not just one figure but one or two, it's amalgamated figures, who had been
players who maybe perhaps were not as talented themselves, but they were, because they were on the fringes of the team and in and out of the team, to wo and they had links to the underworld of bookies and gamblers, to wo phir they became the conduits of those bookies into the team. Yeah. So when I was reading the fix, normally होता ये है कि तो आपको ज़्यादा पता होगा कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसका पर्सपेक्टिव होता है, and we kind of see the story running from the perspective of the protagonist. लेकिन इसमें एक सीन था जहाँ पर सनम की जो स्पिनर बॉलर है वो एक के बाद एक नो बॉल कराती हैं, and then later on she finds out that she has also been contacted by the bookies और उसने पैसा लिया है. तो इस तरह के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वैसे तो बीइंग अ राइटर इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन कितना टाइम आपको लगता है इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स लिखने में? क्योंकि कभी कभी तो आप इम्प्रॉम्प्टू लिख रहे हैं और आप एक के बाद एक आपके पास सीन आ गया. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक अबाउट एडिंग सच ट्विस्ट इन अ नॉवल? Again it comes down to उस टाइम पर राइटिंग के भी पैटर्न्स होते हैं, फ्लोज होते हैं. अगेन to you keep using that word, कि कभी आपकी जब बिल्कुल आप ये चीज़ें आपको आ रही होती हैं, so you can kind of write a very large chunk of a book even in a single day. मतलब मैंने ऐसे भी किया है कि एक दिन में 20,000 वर्ड लिख दिए, of a book that was maybe 100,000 words, so 1/5 of the book was written in one day. और ऐसे भी हुआ है कि आप आप 2-3 महीने लिखते ही नहीं हो, because you're not finding that inspiration, then you come back to it and then you kind of all of a sudden come up with a twist scene that then you kind of take forward, and usme phir you get back into the rhythm of things. So it really depends. It's again मैं इसको उस तरीके से कहूँगा कि इसका जो सबसे जो सिमिलर मेटाफोर बनेगा वो ये है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आप अगर बैटिंग करते हैं तो आपको कोई ऐसे दिन होते हैं कि हर बॉल जो है वो बल्ले के बीच से जा रही होती है, एंड यू फील सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि ये तो कोई भी आगे बॉलर आ जाए, आई एम मिडलिंग एवरीथिंग. और कुछ दिन होते हैं कि आप प्ले और मिस करेंगे, फिर आप थोड़ा स्क्रैच अराउंड करेंगे. तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट कि वो कुछ वो वाले दिन आते हैं जब बल्ले पर आ रही होती है तो फिर आप कहते हो चलो इसको लिखते जाओ. And other days when you're scratching around for it, then you kind of know कि नहीं यार वो बस ठीक है, stay in the game, don't quit, but आ जाएगा, it'll come back to that thing. So what is more interesting for you, writing or editing? Writing. I am a very bad editor because I think I put in so much energy into the writing that I can maybe take the first look at it कि अच्छा चलो ये लिख लिया, फिर इसको एक नज़र देख लो. लेकिन एक जो पब्लिशिंग की जो प्रोसेस होती है ना, which is very rigorous, where just taking one look at it is not enough. You have to go through several iterations कि फिर आप पहले खुद वो करके भेजोगे, फिर आपको एडिटर वापस भेजेगा कि यार इसको देख लें, इसको देख लें. You go through at least 4 or 5 iterations or drafts before it's the final product. And I have always found that it's very difficult for me to keep going back to it, because in many ways once I finished writing the book, so I'm done with that. I'm sort of spent, and usually I'm moving on to the next idea. Right. So then to keep coming back कि अच्छा वो उसकी क्या था तो ये था, becomes a little irritating, especially when you've just finished it, So I always have this sort of long running argument with my wife who says कि यार तुम editing को seriously नहीं लेते हो, and I keep telling her कि editing जो है वो editor का काम है, वो मेरा काम नहीं है. तो मैंने तो किताब लिख दी है तो वो अब edit कर ले. So yeah, I think as I said, I'm not a very good editor. So when you write, तो आपका process क्या होता है? Do you write on a paper and pen and then you transfer to the PC? आप कहीं पे शुरू कर नहीं, मेरे ख्याल से पेपर और पेन के तो दिन ख़त्म ही हो गए अब. I write directly on my laptop. तो मैं उसी पर लिखता हूँ, and then the book sort of progresses from there. So जैसे आपने manuscript लिखना शुरू किया, so like if you've written 10,000 words in a day, so do you edit while you're writing या बस आप flow में चलते रहते हैं कि edit बाद में देखेंगे?
So I think it's interesting कि this thing I said about when you're middling the ball. तो I think उसमें मुझे हमेशा ये लगता है कि when you are in that mental state that it's really working for you, your editing is also better. Yes. Right? So in your first draft it's also better, and then immediately अगर आपने कोई इसमें ज़ेर ज़बर का होता भी है तो आप edit भी उसी टाइम कर लेते हो live, whereas then when you are kind of not in that state of mind, then the editing required for those portions is heavier. Yes. Because आपने आपने जोड़ तोड़ के लिखा होता ना कि एक पैराग्राफ एक दिन लिख दिया फिर 2 दिन छोड़कर अगला पैराग्राफ, so it can be a little more disjointed. Whereas if you've sort of done, as you said, 10,000 words in a day, that means that you've done a very large chunk of a book, maybe 2 chapters or whatever, and they've been written in a certain cadence and a certain rhythm. तो उसमें generally speaking editing की कम ज़रूरत पड़ती है, as a general rule. बिल्कुल ऐसे ही.